जी, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ कि स्पाइस एफएम से, स्पाइस एफएम पर हमारे साथ राबिया नासिर महमूद जी हैं, जो कि मुल्तान से हैं। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम फेसबुक लाइव को कैसे यूज करते हैं। यू कैन यूज इट फॉर अब्यूजिंग पीपल, यू कैन यूज इट फॉर ग्रोथ, यू can use it for shrinking your own ego, or you can be just putting up pictures of 30 years ago and looking pretty on it, boys and girls all, or just photographs which has no meaning. Facebook is now a visual electronic medium where you express yourself. Let me tag in Rabia. So there she is. Hello, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई कैसी है? अभी आपकी तारीफ करने लगा था कि आप वापस आ गई। चलिए। अच्छा, मैं तो कोई बैठाती हूँ, मेरी तारीफ करे। नहीं, मैं ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको शुक्रिया अदा कर लूँ। You gave me time। आपने मुझे पहले भी इनवाइट। अच्छा। आपके देखिए, एक तो आप पाकिस्तान में हैं, दूसरे आप छोटे शहर में, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद लेडी हैं, आप बुर्के में नहीं हैं, आप दुनिया के सामने आप खड़े होकर बोलते हैं, मैं अपना सर झुकाता हूँ। Really, I like people like you. I really admire strong ladies. आपकी रब्बानी जो थी, इंदिरा गांधी जो थी, इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर औरत है, इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर औरत है। Why not? Do you know that 30% of airline pilots, commercial pilots are women in India? अभी एक सेंटेंस खत्म कर रहा था, किसी ने पूछा how do we bring peace? मैंने कहा मिलिट्री वालों को ताला बंद, रिलीजियस वाले को ताला बंद, पॉलिटिक्स वाले को ताला बंद। Let the business go on, let the movies go on, let the गाना बजाना go on, let the friendship go on, let the खाना पीना go on. ठीक बोला ना? अच्छा, श्री गणेश कहते थे। तो मेरा श्री गणेश ऐसे हुआ था कि मुझे रेहान भाई ने रेहान लवाज के वजह से हम सारे कनेक्टेड हैं। हाँ, उनको मैंने बोला कि मुझे ना ट्रेनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो उन्होंने हमारे मुल्क के ये आइडिया कहाँ से आया कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है? ये कहाँ से आया? हाँ, ये मुझे लगता है कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ, मैं नेटवर्किंग में अच्छी हूँ। अच्छा। तो जिसके पास जो चीज फरावानी से होती है तो वो उसको इस्तेमाल में लाए तो उससे वो बहुत बेहतरी क्रिएट कर सकता है कि वो खुदा ने उसे वो चीज अलग से दी हुई है। तो उसी को आप इम्प्रूव कीजिए rather than do something कि अबू ने कर दिया, मैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है ना? तो आपके अबू अम्मी ने तो आपको वो करने दिया जो आप हैं। लेकिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी स्टडी जो है अब्बू के कहने पे की थी, मैंने भी दूसरों की तरह कि मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया क्योंकि मैं जब बैंकिंग फील्ड में जाना था वहां जाके काम करके देखा दिल ही नहीं लगता था। बहुत अच्छे। तो हाँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि ये चीज मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया कि ये चीज ज्यादा है, मुझे लोगों से बात करके उनको सर्विस देके। हालांकि मैंने 1 साल बैंक में जॉब की ना, तो वहां से अकाउंट ओपनिंग पे था मेरा काम। तो वहाँ कस्टमर आ रहे थे तो मुझे उनको गाइड करना होता था, ये कर दें, वो कर दें, आप ऐसा कर ले। लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड करना थी ना, वो मुझे बड़ी खुशी दे देता था। गिविंग केयर आपको अच्छा लगता है? हाँ, मुझे अच्छा लगता था तब। तो आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज दैट कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मुझे इस पे काम करना चाहिए। और मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में ये ख्वाब है अभी भी कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए आई हूँ और मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ इस तरह करना है। तो ये तमाम जो है बैकग्राउंड स्टोरी मेरे दिमाग में है, जिसकी वजह से जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका दिल कुछ कहता है ना आपको, या दिमाग में कुछ ऐसा अजीब गरीब किस्म का है, तो वो सच होती है बात, उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया, रेहान भाई से शेयर किया ये आइडिया कि मुझे ये करना है। हमारे मुल्क के कितना दिन पहले ये आई गेस लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की बात है, या मतलब साल होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह डॉक्टर आनंद कि आप जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हर इंसान, मुझे लगता है हमें ये चाहिए, हम इंसानियत को भी समझें, हम मजहब को भी समझें, और हम हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, उसकी ग़िज़ा भी समझें। जब हम सबको समझ के चलेंगे ना, तो हम कुछ चीज़ों को प्रेफर नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स को प्रेफर नहीं करेंगे, रिलीजन को प्रेफर नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि अच्छा, अगर इंसानी फितरत में ये चीज़ आती है कि मोहब्बत है, मोहब्बत करना है, इंसानी फितरत में ये चीज़ आती है कि मुझे गाना गाना है, तो इसमें गलत क्या है? वो तमाम चीज़ें टैबू है, जिससे बात नहीं करनी। हमारे माशरे में हम बात नहीं कर सकते सेक्स पे, हम
हमारे मजहब में बिल्कुल अलाउ नहीं है इन चीजों पे बात करना। लाइक आप एक शर्म और वो महसूस करते हैं, लेकिन ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। दिस इज अ नेचुरल थिंग गॉड हैज क्रिएटेड इन दैट वे। बात है कि आप अपनी जिंदगी की लाइवलीनेस को अगर आप लेके चलते हैं और वही चार आपके इर्द गिर्द है, तो वो इसका मतलब है आपने जिंदगी समझा है, तो उसको जानने दिया अपने हाथों से। बिल्कुल। ये बात बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग लगती है। अब कल है मेरा बर्थडे, जन्मदिन कल। एज कितना होगा? 72, 72 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आई डोंट फील इट, आई एम एंजॉयिंग लाइफ। आई वांट टू बी लाइक यू। हमारी उम्र गुजर गई, एक टांग कब्र में, या तो दूसरा तो बाहर है। क्यों बच्चों को तंग करते हैं? आपका वो जो शावरा वाला बच्चू है, कहता हमारे लोग जब गे बू बू करने लगते हैं, आपसे बात करते हैं, हमको आनंद भाई बोलता है, 5.5 साल का बच्चा। वो जो हसनैन है, इट इज अबाउट ट्यूनिंग इन। ऑब्वियसली आपसे जो बातें करेंगे और मर्दों के पीछे बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन ज्यादा का फर्क नहीं है। आइडियाज वही है, तहजीब अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन ये नहीं है कि ये बात यहाँ नहीं बोल सकते, वहां नहीं बोल सकते। हम विदेश में वैसे लकी हैं, खास करके न्यूकासल में। यहाँ हिंदू मुस्लिम टेंशन तो है ही नहीं। लोकल लोग बड़े हमारे सपोर्टिव हैं, पीपल वेरी नाइस। अब हम कल ब्रैडफोर्ड गए थे, वहाँ मुसलमान भी खुश हैं, हिंदू भी, पाकिस्तानी भी, इंडियन, बट दे डोंट मिक्स। यहाँ पर आना जाना बहुत कॉमन है। एक काउंसिल ऑफ फेथ का मीटिंग था, मेरा दोस्त अली महमूद गया था गुरुद्वारे में। नबीला अली जो कि जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी है, उसकी वाइफ, वो एक अमन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एंटी रेडिकलाइजेशन, मुसलमान होके। सो न्यूकासल एक बहुत लकी जगह है जहाँ सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो हम तो बहुत अपने को किस्मत वाले समझते हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ इंडियन पाकिस्तानी। तो भाइयों, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम आपको सेकंड पार्ट पे लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट हमने आज रिकॉर्ड किया था, आज सुबह, और ये हैं वही लेडी डूइंग समथिंग डिफरेंट। और ये लेडी हमारे साथ इंटरनेट पर इतना कनेक्शन हो गया, शी कनेक्टेड मी विद मियाँ अतीक, जो कि डिजिटल सेनेटर हैं पाकिस्तान के। अब आप बताइए, अगर कोई उस लेवल का आदमी हो और उनका वेबसाइट ये बनाती हो, तो मेरा क्यों नहीं बना सकती? मैं यही सोच के, चलिए तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है फिर से। बिल्कुल ठीक है। और हमें याद पड़ रहा है कि तकरीबन 4.5 साल पहले आपसे स्पाइस पर हमने कनेक्ट किया था, और वो थोड़ा सा हम दिखा चुके हैं। अब बताइए, वहां से आपकी जर्नी 4 साल पहले से अभी तक, आप इतनी एक्टिव लेडी हो, इतनी एक्टिव हो, बहुत कुछ किया होगा इतने सालों में, और फिर आप अभी क्या कर रही हैं, उस पर आएंगे। बताइए कैसे कैसे आप सालों साल कैसे अपने को इम्प्रूव किया, कनेक्ट किया, वुमेन को प्रमोट किया, बताएं। खुल्लत जैसे बोले आप। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जब पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी स्पाइस एफएम पे, और तब हमारी पहली मुलाकात थी टू नो वन अनदर वर्क, क्योंकि मैंने आपके प्लेटफॉर्म को देखा था रेहान भाई के तवसत से। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं एक्सप्लोर करूँ कि अच्छा डॉक्टर आनंद क्या कर रहे हैं। उस वक्त मेरा आपसे इंट्रोडक्शन ये था कि आप फिल्म्स भी बना रहे हैं, या आप रेडियो से मुंसलिक हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ करें। सो दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपसे उस वक्त बात हुई थी। और आई थिंक जो सोशल मीडिया है वो जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, हम उसको थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते देख रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे लिए भी ये रियलाइजेशन देन मतलब अपने आप को मजीद, जैसे कहते हैं उर्दू में इर्तिका कहते हैं, और अपने आप को मजीद प्रोग्रेस होते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग देखना। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इस तरह ऑल्दो मेरे टारगेट्स पहले भी हाई थे, पर मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज से, ह्यूमन बीइंग्स से बात करते हैं, तो आप अपने आप को ग्रो करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, समझते हैं कि अच्छा आपके लिए और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मेरे लिए तब से लेकर अब तक ये सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं समझती हूँ कि मैंने अपने लिए एक बेहतरीन मंजिल के बारे में सोचा है, और शायद मेरा ख्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों से कनेक्ट ना करती, तो मैं ना सोचती कि मेरे अंदर इतना बड़ा जिन है
अगर मुझे जिन का पहले पता चल जाता कि ये मैं ये सोचती रखती हूँ अपने बारे में, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में अपनी जो सफर है अपनी मंजिल तक पहुंचने का जल्दी स्टार्ट कर लेती। लेकिन आई एम हैप्पी कि हर चीज का टाइम है और उस टाइम में भी वो आनी है। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन द पाथ के जहाँ मुझे मौका मिला है बहुत से लोगों से कनेक्ट करने का, एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करने का। और मैं लकी भी रही हूँ कि मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरे नेटवर्क से मिली है और आसानी भी मिली है मुझे ना बहुत ज़्यादा। तो आप मैंने ये उसके बताती बाद हैं कि आपने फुल एडवांटेज लिया है इंटरनेट का, एंड दैट्स वंडरफुल बिकॉज अमूमन इंटरनेट पर गाली गलौज छोटी बातें, बट यू हैव यूज्ड इट टू फुल एडवांटेज, और आप अपने को मोल्ड करते जा रही हैं। देखिए, मैं भी 2 साल दिल्ली में जाके फिजिक्स पढ़ा, बोर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग से बोर। मैं डॉक्टर बना, बिल्कुल खुश हूँ। इसलिए वो वक्त बर्बाद नहीं होता है जो आप कुछ और करके आती हैं अपने में, और ज्यादा जज्बा लेकर आती हैं, है कि नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि जब आप अच्छे से रियलाइज करते हैं कि अच्छा आपके लिए कुछ बेहतरीन मुस्तकबिल है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा हैं, तो वाई नॉट कि आप उस जिस पाथ में हैं उसमें अपने आप को मजीद एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ें हिम्मत से। ऑब्वियसली नया पाथ होगा तो फेलियर्स भी होंगे, और अगर फेलियर्स होंगे तो फिर जो है फिर आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपने करना है, कंटिन्यू करना है या आपने रुक जाना है और फिर रास्ता चेंज करना। तो ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है। पर मेरा ख्याल ये है कि हमें जिस रास्ते पे चल रहे हों, अगर हमें अंदर से ये महसूस होता है, यकीन होता है कि हमें इस रास्ते पे चल के अपनी मंजिल मिल जाएगी, तो हमें उस रास्ते को पे अपना चलना कंटिन्यू रखना चाहिए, रादर कि हम स्टॉप करें और फिर एक नई डेस्टिनेशन की तरफ चलें। मुझे एक मुकेश का गाना याद आ रहा है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, करती हैं, तो अल्लाह मियाँ सबको अपॉर्चुनिटीज देता है। आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, वी डोंट टेक देम, डर लगा एग्री। रहता है कि नहीं? यही आपके आपके प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज, या आपकी बात में एग्री करती हूँ, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास पहले भी होती हैं। हर वक्त जब हम रियलाइज करते हैं कि इन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम इनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, तो फिर हमें यानी कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो यही मतलब आप अपने आप को ग्रो करते हैं। जब आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं कि कैसे आप इस जगह पे, जिस जगह पे हैं, इस जगह पे रहते हुए आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं, बेहतरीन गिवर बन सकते हैं। इसमें देर भी लग सकती है, इसमें बहुत लोगों को जल्दी भी चीजें मिल सकती हैं, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो रियलाइजेशन कब तक मतलब हमें आ जाती है कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इस एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने लोगों से कनेक्ट किया, अगर मैं अपना काम स्टार्ट कर देती बिजनेस, क्योंकि उससे पहले मैं जॉब कर रही थी डिफरेंट इदारों के साथ, तो मैं समझती हूँ कि वो एक नया एक्सपीरियंस था कि आप अपने अंदर से बहुत सारे फियर्स को एड्रेस करते हैं। आप देखते हैं कि ओह, ये तो सिर्फ एक ख्याल ही था, एंड बहुत सारी चीज़ों में ग्रो करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया, एंड मैं इस बात में हूँ और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं जो मैंने अपने लिए सोचा है मुस्तकबिल, वो मेरा इंतजार कर रहा है। एक बात बताइए कि अमूमन लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, अम्मी जान क्या कहेंगी, अब्बू क्या कहेंगे। आपको कैसा सपोर्ट मिला कि आप अपने चुने हुए रास्ते पर जा रही हैं और लोग आपको सपोर्ट करते जा रहे हैं? आप कारवां बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए, वाली बात है आपकी। इसमें सबसे पहले मैं समझती हूँ कि सबसे पहला डिसीजन मेरा अपना था कि मैंने सोचा कि मुझे ये करना है। तो जब हम कोई भी इंसान कोई चीज़ करता है और सोचता है, तो फिर बाकी सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं मुझे ये चाहिए, ये मुझे इस रास्ते पे जाना है। तो उसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो उसी इंसान का होता है जिसकी ज़िंदगी या जिसने डिसाइड कर रखा है अपने लिए कुछ। तो उसमें ये तमाम सारी बातें कि लोग क्या कहेंगे, और बहुत सारी ऐसी जुमले जो कि हमें रुकावट का और बाज़ औक़ात हमारी एनर्जी भी
खींच लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो ऐसे तमाम बातें जब आप खुद डिसीजन लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कम ही रुकावट बनते हैं ये जुमले, लेकिन बनते ज़रूर हैं। तो बनते हैं तो वो बाद में फिर आप खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं कि भाई अच्छा हम आखिरकार इस रास्ते पे हैं ही क्यों, क्योंकि आखिरकार तो इंसान को अपने अंदर की आवाज़ बता ही रही होती है ना कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये तमाम जो इस तरह की बातें जो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, माहौल का भी होता है। सो मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस किस्म का माहौल नहीं मिला जिसमें मुझे ये बातें सुननी पड़ी। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, लकी नहीं है, आप काम पे लगी रहती हैं, यू नॉट कंसर्न कि बाकी लोग क्या कहते हैं। लक लक है थोड़ा बहुत, लेकिन लोग लक को ब्लेम करते हैं क्योंकि अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और एक बात और बता दूं देखने वालों को, सुनने वालों को, कि आपने हमारा वेबसाइट को कंट्रोल किया हुआ है, रखा हुआ है। तो प्रेम नगर तो उस फिल्म का सिंगल टाइटल था, लड़की उसमें जाकर मुझको के रहे, डीएन मधोक घर साहब से इतना दूर इतना काम किया, तो पहला ऑब्वियसली योर पेरेंट्स हैव सपोर्टेड यू अ लॉट, स्टोरी फादर है। मदर, कुछ उनके बारे में भी बता दीजिए। हाँ जी, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को बनाने में और ख़ास तौर पे उसकी जो नज़रियात हैं उसको बनाने में एक बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो उसी तरह बन रही होती है जिस तरह हम अपने वालिदैन को बिहेवियर करते हैं, परफॉर्म करते देखते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में वो किस तरह लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा है, या किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट रिलेशनशिप्स को निभा रहे हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हैं, क्या या उनकी सोच ज़िंदगी को गुजारने को लेकर कैसी है। तो इसका बहुत ज़्यादा असर, 90% असर तो मुझे लगता है कि इसी का बहुत ज़्यादा असर होता है। 10% उस पर्सनैलिटी का होता है। तो मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ कि मैं हर वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस समझती हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना भी करूँ तो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि मुझे ये जिस रास्ता मैंने चुना हुआ है मैं इस रास्ते पे जाऊँ, कोई मुश्किल है। लेकिन मैं अंदर से महसूस करती हूँ कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स के बाद और फिर तालीम होने के बाद और फिर इतनी स्ट्रगल के बाद आप अगर कोई अपने लिए बड़ी डेस्टिनेशन सोचे तो आप ज़रूर उस पे जाएं, क्योंकि एक बंदे की लाइफ उसमें लग रही होती है। अगर मैंने अपने वालिद को देखा है कि उन्होंने वो एक इंसान थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो उनको मिली थी और जो हमें मिली है वो उसे टर्न अराउंड किया। तो अगर मेरे वालिद कर सकते हैं तो कोई ना कोई एक घर में उसी सोच को तो लेके चलेगा ना। एंड मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे वालिद के आइडियाज बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में वो लागू करना, आप अपनी ज़िंदगी में वो लागू रखूँगी, अच्छी बात है। उनमें से एक बात ये भी मुझे अच्छी लगती है कि भाई जब आप स्ट्रगल पे हैं, अब वो नया रास्ता है, वो किसी को पता नहीं है क्योंकि वो नया रास्ता है, उसमें मुश्किलात हैं, हर्डल्स हैं, उसमें नाकामयाबियाँ हैं, जो भी हैं। लेकिन आपने क्योंकि वो स्टार्ट किया है रास्ता, तो उसमें इख्तिताम भी ज़रूर होगा, उसमें अच्छी चीज़ें भी ज़रूर होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं और आपकी अपनी शख्सियत भी, कि आप जो है आप जिस रास्ते पे चले हैं उसमें जो है उस तक ज़रूर पहुँचे। और वालिदैन के लिए तो हमेशा दुआ भी होती है और ये दुआ भी साथ में होती है कि हम वो जो हमारी ज़िंदगी में हमें मिला है हम भी उसको लुटा पाएँ। और हमें याद है कि लास्ट ईयर या 2 साल पहले आपने ई कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, यू ऑर्गेनाइज्ड इट, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने महान लोगों के बीच में आप सबको कंट्रोल कर रही हैं। मैंने ये बात बेहद पसंद है। जी, थैंक यू सो मच। मैं ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म था वो उस्मान चुगताई साहब, मैं उनको गुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो उनका एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान में, वो ई कॉमर्स पे चंद ही लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक जो काम कर रहे हैं वो उस्मान चुगताई साहब है। तो ई कॉमर्स समिट उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो ऑर्गेनाइज कराया था। उसमें 70 स्पीकर्स को मैनेज किया था और वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ था और मुझे उसको मौका मिला, मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और मुझे समझ आई कि अच्छा कि किस तरह वो मैनेज कर सकते हैं उस तरह के इवेंट। और उसके बाद
उसके बाद शालीमार डिजिटल सर्विसेज जो हमारी आईटी कंपनी है, उसके थ्रू हमने पूरे पाकिस्तान में 13 रोड शोज, वर्चुअल रोड शोज कराए थे, जिसमें 2500 से ज़्यादा आईटी कंपनीज को हमने इंगेज किया था। और अभी भी हम एक वर्चुअल इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 10 ममालिक को हम इंटरनेशनल लेवल में 10 ममालिक को हमने आईटी कंपनीज को इंगेज करेंगे ईमेल्स के थ्रू, और हम उनको इंगेज करेंगे ताकि वो हमारे उस वर्चुअल जो है समिट में आए और पार्टिसिपेट भी करें, और हम अच्छा उससे नेटवर्क भी बिल्ड कर पाएँ, उसकी ताकि उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथन कर पाएँ। नहीं, इस समय हम मियाँ अतीक को याद कर रहे हैं। मियाँ अतीक का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं सोचा कि पाकिस्तान का डिजिटल सेनेटर के लिए जो कंपनी ठीक है, वो मेरा काम तो कर ही सकता है। बहुत सिंपल थिंकिंग था एंड इट हैज वर्कड आउट। जो इंटरनेट पर आप हमारा वेबसाइट चला रही हैं, वो मियाँ अतीक का कमाल है ना। आपको बाबा, आप उनको बाबा बोलती हैं। ही इज अ वंडरफुल गाय मियाँ अतीक हाँ साहब। जी, बिल्कुल, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। और 2 प्रोजेक्ट्स, एक शालीमार डिजिटल सर्विसेज और एक डिजिटल पाकिस्तान, मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया। उनकी जो है एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला। बहुत सारी नई चीज़ें मैंने उनसे सीखी एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो एक मुझे मेरे ख्याल में इस नेटवर्क में हर किसी के साथ काम करने का मौका मिला। रेहान भाई के साथ, You can talk उस्मान very भाई slowly का from the मैंने computer. अब इनके साथ काम करने का So मौका what मिला। are the things we want to उनका talk way of about doing है in your case? काफ़ी डिफरेंट है दूसरे लोगों के So साथ। obviously just तो about काफ़ी the, ज़्यादा इन्होंने I business think give it mainly a about the किया है, program. वो So, patience so चाहिए होता है। obviously it's about local solicitors, I'm thankful कि वो Newcastle, बहुत ज़्यादा northeast humble based इंसान है। solicitors. Okay, so I'll say, Because how did it all happen? Yeah, so मुझे there's उससे a कि production आप company got in touch entrepreneur with के us. साथ They've been बहुत काम speaking to us किए for हैं। many years. जो काम सब आप ले रही हैं, there are people who are And doing obviously different they're doing outside the a box program of एक second, I'll write it down. रास्ते पर नहीं चलते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो जो वो लाइक हर किसी का वे डिफरेंट है, पर वो एक कोशिश कर रहे हैं एक इकोसिस्टम को इवॉल्व करने की। पर ये तमाम लोग पाकिस्तान में एक जो है एक किसी ना किसी बड़ी चीज को एड्रेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। और चंद ही लोग हैं जो हम ना So तो I'm lucky कि मुझे उनके साथ So Northern Justice is a मैं lucky थी। उन सबको मेरे साथ काम करने का मौका मिला। it's called Northern Justice. उन्हें भी Yeah. अच्छा लगता होगा कि कोई एक छोटी सी जान को हम इतना How many प्यार firms करते were हैं, involved? यूज करती है। You know, I'm not sure altogether. It's maybe about 6 to 8. काम है, ऊपर समझना चाहिए। बहुत मेहनत है। बहुत बहुत Local, Yeah. local Durham Sharan Sahab. Yeah, so it was Northeast firms. Northeast. Yeah. The BBC are keen because of now regionalised. They're keen to set up and produce programs up here. There's not many production. Otherwise, they don't produce anything. Yeah, so They farm out they've got budgets, you know, now to set. You can say all this, huh? So they've got now. Understand as one of the you know the managers, the directors is now up here. One of the commissioning directors lives here. Okay. In the northeast, so they're keen to push more programs here. Not just about solicitors, but Yeah, they're doing another one with Robson Green at the minute. the accountants. No, sorry, Robson. What's he called? Robson. Redler. No, the actor. Is it not Robson Oh. Green? Yes. Maybe. Howard Robson Redler is a firm solicitor. Yeah. Anyway, So basically, so then I'll ask you, how many shows have you done? yeah. So there's 10 half-hour shows, counting on showing different stories. But all from your place. No, so there's 2 stories per episode, and we feature in, we're one of the main contributors, we feature in 3 episodes, 3 stories, including the first story on episode 1. So on episode 1, and then which was the next one? Episode 8 and episode 9. 1, 8 and 9. Yeah. And when did they come out, or when have they? So it was released, unfortunately, sadly, with the Queen's funeral. It was supposed to be originally shown last Monday, but then it obviously got pushed back to Tuesday. So there wasn't actually that much promotion. So when did the first one actually go? It came out last Tuesday, the 20th. 20.
Yeah, 20th of 20th September. September. And the last one is coming out tomorrow. What they've done is we've run them So consecutively. you said there was 1, 8, and 9. Yeah, so I was on episode 1 1 and then 8, and 9. which are 2 different dates. Yeah, so episode 8 and episode 9. Where is the 8th to be? So the 8th was on Thursday. And what date was that? Just a Thursday just gone. तो मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी काफी ज्यादा खवातीन जो मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखती हैं और जो लास्ट हमने The 29th. So 28th, 29th. Yeah, and then the But they're 30th. not the same day then? No, so what's happened is that basically there's 10 half-an-hour programs. Ah, So they're being shown consecutively on each day, each weekday, Okay. starting from Tuesday Okay. at 10 o'clock. So the first one was on Tuesday, the 20th of September. okay. And the last one, the 9th one? It's Thursday, Friday the 30th. It was on this Friday just gone. Okay. But the good thing is on iPlayer. That's what we want to push We out. want to say that to them. Yeah. And ask how do you get on iPlayer for those who don't. Basically on the website, what we're going to do, we're updating it next week. So we're waiting for the programs to go out, and we're going to hyperlink them. So there's links on the website. Actually, that's enough. First I'll ask how are you because I haven't seen you for ages. Yeah. So basically, it's a program. It's ordinary solicitors. What was shown is ordinary solicitors helping ordinary people. That's the line. So not big firms. No, it's all right. I was just thinking, is it going out through the mic what we are saying? No, it's not. It's going internally through that. So it's running off the laptop into here. Okay. Today is the first time I'm starting at 8. Otherwise, it's only English. And I need a bit of badmashi, a bit gupshup, a bit. You'll put on your headphones as well? What time do you normally start? I used to be 8 to 9. Now I'm... Is the program live now? yeah. All right, I didn't. But it's running through there. All right, I thought you were like kind of. No, it's not disturbing anyone. Let me just take this jacket off. And I didn't realize. I'll just check our volume levels. I thought you started at 9. You see. It was until last night. Right. I negotiated with Sandeep to get Is there? How long are we going to be? half an hour. Oh, that's all right. I just wanted a wee. Okay, have a wee. Yeah. So you take the pass. Where is it? Where is the pass? Where's it go now? I brought the pass to you. आ गया भाई. There. So what? So you Go back in there. as you go there, there'll be a green button. Yeah. But beyond that is a white plaque against which. वो रेडियो पर भी सुनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा कनेक्ट द अनकनेक्टेड हमें बहुत अच्छा लगता है हमारा इसमें क्या लेना देना लेकिन हमें बहुत उसमें खुशी मिलती है तसल्ली मिलती है कि किसी दो पीपल हु वुडंट हैव नोन ईच अदर अच्छा और बताते एक मरिया अफजल है वो मुसलमान वो दिवाली बाजार लगा रही है स्टैनफोर्ड में एंड आई लाइक ऑल दीस काइंड ऑफ पीपल जिनमें करेज है टू स्टेप आउट ये नहीं कि बस अपने छोटे दायरे में जी रहे हैं किसी तरह जी रहे हैं So there's a lot of changes and I think social media का यही कमाल है जिसको आप fully use कर रही हैं और हम fully use कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ मुझे खुशी होती है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स रह के सोचा जाए या किया जाए तो आप बेहतर रिजल्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हाँ जी आप म्यूट पर चली गई अपने वजह से नहीं इंटरनेट की वजह से अल्लाह करे कि हमारा बेटर होता चला जाए। अच्छा आगे क्या इसका करना है आपका इरादा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस वगैरह सब तक ले जाएं आपके अरमान बहुत बड़े हैं एंड थैंक गॉड फॉर दैट छोटा सोच आपका है ही नहीं चीज है मैं ही चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी मैंने बताया कि काफी
So I'll send you the link to the show. Great. I'm gonna get some posters out as well. I've got some posters done, and obviously whatever else you can do. So that was the problem. They didn't promote it because of the Queen's funeral. So we were behind time. So we'd had promotional material to pick up on. But apparently viewing figures are very good. I shouldn't really know about it, but you have been told. They're aware of it. Yeah. Is the sound coming to you? Can you hear me? I can hear it. And I can increase the volume a little bit. That's clear, isn't it? Yeah. That's clear. Okay. Yeah. Right. So that's not going through. That's just queuing up. Okay. Thanks. क्योंकि उस पे collaborations पे काम हो रहा है. So जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज के दौर में चीजें करना बहुत ज़्यादा आसान है. Collaborative mode पे बहुत सारी organization के साथ आपकी बहुत ज़्यादा trust building हो सकती है. वहाँ जाने से पहले आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अरेंज करा सकते हैं अपने मुल्क में भी, क्योंकि मैं अपने मुल्क में सबको जानती हूँ ना, गवर्नमेंट लेवल के लोगों को. But don't you want me to ask questions about immigration, how it's changed? You can do. It's no problem. Just fire away. Oh, no. So what's changed? So basically, there's a new Nationality Act that looks that's quite strange. So then you're telling people... Nationality Immigration Act 2022, it's quite strict on nationality, asylum, refugee. So one of the keys is that this the program, the 3 stories that link in or articulate family life. So our kind of now motto informally is keeping families together. And obviously, should have been the motto from day one. All the stories are about keeping the family together. Yeah. So I'll say whatever. I mean, I don't give away everything, but what are your stories like? And are they English? Are they Asian? And that will give you the opportunity to say. The first one's Jamaican. I know you can tell me that. That's I know, and you have told me that, but I'll ask. Yeah. It'll be nice to say. Yeah. आपको मैं थोड़ा बताऊं इंटरनेट का कनेक्टिविटी कितने कमाल का है. आपको शायद मालूम हो कि 2 साल मैंने पाकिस्तान ब्रेस्ट अवेयरनेस का साइट को होल्ड किया था. जी. मैं ना पाकिस्तानी, ना मैं औरत, ना मैं कोई ब्रेस्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर. And then जो डॉक्टर मैंने जोड़ा था Nationality Act 2022. Yeah. दूसरा मेरा दोस्त राजा खान 22 या 26 हजार पाउंड जमा किया है एक रात में 14 दिन मेहनत करके कम्युनिटी फॉर द सलाब के लिए वो जमा किया इतना पैसा और जा रहा है. अब कौन उसको हेल्प करेगा? सिंध में औरंगजेब, जिसको आप भी जानती हैं अच्छी तरह, औरंगजेब पल. हम लोग इतना कनेक्टेड हैं कि औरंगजेब एज इफ उससे बातें होती हैं तो लगता है कि बगल वाले रूम में बात कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कनेक्ट करना. और आप जैसा कहती हैं कि किसी से मिलने के पहले उसको टोटली जान लेती हैं, इसका क्या रवैया है, क्या सोचता है, क्या कितने पानी में है, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या चीज के लिए यूजफुल होगा. इंटरनेट का ये खूबी है बिना रूम से निकले. लेकिन एक बात और है कि जब आप फिजिकली मिलती हैं, वर्चुअली नहीं, इन रियलिटी, तब बात और हो जाती है. ये भी बात सही है. लेकिन 90% ऑफ द प्रिपरेशन कैन बी डन ऑन द इंटरनेट, जो कि आप करती हैं और हम भी करते हैं. तो इंटरनेट का अच्छा यूसेज भी है. देयर आर गुड यूसेज. लोग कहते हैं इंटरनेट पे ये गंदगी हो, भाई उधर मत जाओ, अच्छी बातें शेयर करो, पॉजिटिव बातें शेयर करो. नहीं तो आप व्हाट्सएप पर बैठे बैठे बस इधर का गंदगी उधर का गंदगी. हम तो बिल्कुल नहीं शेयर करते हैं. कोई अगर भेजता है तो हम डांट देते हैं, व्हाई सेंडिंग दिस टू मी. तो कहते हैं गलती से आपको भेजा. अच्छा, आप किसी को ना भेजें, मुझे गलती से नहीं भेजें, किसी को भी ना भेजें. ये नेगेटिव बातें क्यों शेयर कर रहे हो? अखबार टेलीविजन में तो भरा हुआ है ये सब. हम लोग को नहीं करना चाहिए. वुड यू एग्री विद दैट? Yes, I agree with that. मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी यहाँ कि आप जब इंटरनेट की दुनिया में लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, तो आपके अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर या शहरों में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ई-लाइब्रेरी की सहूलत दी है. उस लाइब्रेरी के जरिए उसमें इंटरनेट फ्री है, उसमें आप प्रोग्राम सेमिनार्स फ्री करा सकते हैं, उसमें आप काफ़ी चीज़ें करा सकते हैं. और वो हमारे पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें तो वो डिफरेंट पंजाब के शहरों में है. अब वहाँ भी आप अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं. पर आपको इंटरनेट की वजह से ये सहूलत मिल सकती है कि आप इंटरनेट पे बैठे तो जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप ईमेल तलाश करें, आप उनसे कनेक्ट करें, आप उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें. तो आप एक लेवल लाइक
आप एक सिंपल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठ के या सिटी लेवल से उठ के आप एक फेडरल लेवल पे या एक बड़े लेवल पे कैपिटल लेवल पे आप Nationality and Borders Act, but it hasn't come into force yet, so But you can give a preview. I mean, I want to advertise you guys. yeah, it's okay. ये आपको थोड़ा सा आसानी हो सकती है इंटरनेट को इस्तेमाल करके तो opportunity of growth बहुत ज़्यादा है to grow as a person, as an organization, as a city, as a country. वो आपके हाथ में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आपके imagination पर है Or what else? कहाँ की imagination पर What else is cooking? कहाँ है Yes, yes. पिलात आएंगे Just this, really mainly involved in this. ठीक है Just तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आएंगी बहुत ज़्यादा everything else, आने दीजिए COVID survival, kids. I can ask you, how was COVID for you? Yeah. सबको आती भी होगी Yeah, it बहुत was. सारी तकलीफ आता है ये सबको आती भी होगी चाहे आप एनवायरनमेंट जितना भी पॉजिटिव है लाइक यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी इवन दो योर फैमिली है एज वेल पर फिर वही बात कि आप ये क्योंकि जर्नी में आपने चीज़ें स्टार्ट की थी तो आप इस रास्ते पे चल के अगर आपको यकीन है तो इसी रास्ते पे चलें अगर यकीन नहीं है तो आप रास्ता So you're mainly immigration lawyers, mainly. It's only immigration law. that's Only? all. Yeah. That's all you deal with. Yeah. So the good thing about the program, and this is maybe what you can say as well, is that I'm the only immigration lawyer on it. I'm the only ethnic lawyer on it, and also it shows the West End. So this is what we're going to try and publicize on the website and everything. Try and push on it. So there's lots of shots of the West End on it, especially Stand-Up Street. So it's unusual for the Northeast and especially the West End to get so much publicity. It's good for the region. But they just haven't promoted it because of obviously what happened to the Queen. How about you, Doc? How are you? ठीक है, I'm enjoying my political scene. I actually enjoy the campaigning. Yeah. I like a bit of an argument. So I knocked on one window, the fellow was playing the guitar, and I had my leaflet to put through. So I don't have it here. So he saw me, and he said, "Means don't give the leaflet." I said, "I still like your music." I always have the last word. I don't know why non-Lib Dems not so bad. They're bad enough. But Labour people are very nasty to Conservative people. I don't know why. If you give me say you're Labour and give me a leaflet, suppose you say I always vote Labour and don't care about you. Do you think I'll stop talking to you? No. Yeah. But Labour wale bada jazbati. Yeah, I think that's one of the issues. I'm Labour, so I'm a Labour Party supporter as well. So obviously, You're still here? Yeah, no, but it obviously takes everything to go forward, isn't it? And debate and respect for different opinions, isn't it? That's in a nutshell, isn't it? I'm so sorry. नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक कोई भी टारगेट सेट करके एंड उसका जो वे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इसी तरह करेंगे ना No, but if I don't dislike you as a Muslim, if I don't dislike you as a brown person or whatever, why should I dislike you what you vote for? That's your choice. I mean, we can have a discussion. How can I dislike? No, but that's it in a nutshell. There's a passionate. The extension of a conversation, isn't it? It's respectful of his opinions, isn't it? I mean, I didn't go to the conference. I should have been there for the conference. But Rishi didn't get in. Boris has been, for his own stupidity, made a lame duck. Well, It doesn't matter anymore. I should really like that. I met him, but the current, And then Liz Truss is a no, non-entity. but the current economic, it just goes Huh. against. It's crazy, isn't it? The new chancellor's economic policy. But he was her bedmate at one time. Yeah, but it's going against the Bank of England forecast. Huh. They could just play it safe and just say, look, Rishi was okay. I mean, he knew his job. It sounded like he was the one that came across, from a non-Tory voter the best because Yes. he delivered, didn't he? He was one of the few that delivered during that period. Her internet has gone silent, not mine. अरे बोलो ना. Yeah. Oh. She thought I did it. So yeah, so
So I didn't bother going. I thought, there's Diwali happening here, there's all this happening here. So I'm covering all that. So is the conference now? Concert now, tomorrow morning. I think does it start? Where it started in Birmingham. Right. And I thought, it won't get me any more votes, trying to be more blue and more blue and more blue. And people vote for me, they're not voting for the Conservative Party. They vote for me despite being a Conservative. Yeah. I think I mean, some of them will vote blindly. Yeah. But a lot of them are Lib Dems who actually see this fellow is doing some work in Gosford. Well, there's a lot of that's emerging in politics. That's the interesting thing that's emerging is that The borders are not so rigid. No, people are voting for individual characters, because And that's why many people become independent. Yeah, and that's what I'm saying. It's the rise of independence, so that shouldn't be ignored because people are kind of distrusting the mainstream. Yeah. The political and parties. therefore, Yeah. Does it actually affect local politics? A lot of the times, I don't think people feel disenfranchised. That's why the Labour vote has stopped in the north. Tories in different areas, to the Lib Dems. See, my problem is there's 3 Lib Dems in Gosford. But that's my advantage because they do nothing. So I get 901 signatures against the Ballards. And they're trying to take that glory. But people writing on Facebook, excuse me, Dr. Anand has come to my door, you haven't. So, that kind of thinking of being different and not necessarily stuck in your mold. You might even do well as an independent. I would, but I need more. So I don't have the support, I don't have enough people to run with me. I can see where it's come from. It's just this conversation, isn't it? You probably could then run as it. And but then you would also get other support then of the party support as a way. As independent, it's not the worst thing. But. Ab dekho, I mean, I'll stand as I was thinking of a police crimes commissioner, but that's a huge area to cover. Because you know better than me how useful they are. The police might as well be disbanded. A car nearly killed me on the 1st of September. I saw that in the newspaper. And the police haven't taken any statement from me yet. They're so underfunded. They're so. It's. So they might well shut shop. Okay, thank you so much. I mean, is the funding less than it was 10 years ago? I don't know exact figures, but they keep on saying that the funded on personal cases that I've heard from the police are just not investigating certain crimes, and it's I don't know. It's again seems a disarray, so I don't know. And then there's the other thing that I get from social services. Very, very angry parents of how their children were taken away for very minor stuff. I mean, obviously that's one side of the story. But I always think it's better to educate. Say someone comes from Kashmir, Azad Kashmir, an illiterate grandmother, and she slaps the grandson. Yeah, that's only a slap, Don't break the family for one. And it's better that the social worker comes and says, look, you can't do this. You might have slapped your son when he was there. Yeah. There should be some allowance about Al-Qaeda cases, And you teach. I'm not saying you should be allowed to carry on doing that. Obviously. But they should be told and say, yeah. And then say, don't do it again, If you then obviously carry on with it, then that's a repeat crime. There is this, I've got a Syrian guy working for it just one day of the week, ex-Syrian lawyer, very interesting. He's trying to retrain. Right. And he finds this for the Syrian community, it's quite, Same as with this. But the difference is it's education level. So what it is that all the kind of immigrant communities that come across, it differs roughly on how educated they are. So you've got people from rural areas. It's more difficult to have these values as to adapt. People from the same from India or Pakistan. No, but it's anywhere. So it's the education that's the difference. Dealing with immigration law and it's education, general kind of education and general, what's wrong and right. In a village somewhere, it's not going to apply, is it? So. I mean, it's a wider debate as to. Should we be imposed now kind of rules and whatever? But then obviously there's you teach. Students, isn't it? You need that. But I use the example of a daughter-in-law in a patriarchal society. First she adjusts to a large extent, then she starts exerting, and then she becomes the boss. I mean, I'm not at the stage where I'm adjusting. I tell them where to. I go to meetings and
have a lot of conversations about, they said to be a good Tory, you have to be a Christian. I said, you know, the Christians didn't invent morality. Before them, the Jews were there. Before them, the Hindus were there. And before them, God knows how many people were there. So I think you are a frog in the well that needs to jump out of the well. I say these things at AGMs and things. They say these kind of things, and I'm sitting there. Thank you very much. But it Okay, sounds acha, like a change. I'll have to take. I'll take over now. और लोग भी होंगे, खास करके औरतें, young women should not hold themselves back. Just do what you want to do. As long as you're not doing anything illegal or immoral, you have to do it. So believe in yourself, as Rabia says. Thank you very much.